Hello everyone, Namaskar. Today I am going to teach you the phrases of stand if we are adding some preposition or noun with this meaning. It is making a very interesting phrase that we guys can use in our day-to-day life conversation, and I am very happy that I have completed 27 classes already of this 30 days challenge, and it is going to be the day 28th of this challenge, and I'm uploading the videos with the consistency. I am consistent in my learning journey, in my teaching journey. You guys have to be consistent in your learning journey. Okay, so watch this video till then. I will be telling the very interesting phrases in this video that you guys can use in your day-to-day life conversation. Okay, so without any further delay, let's get started. So guys, the phrase number one, that is stand out. Stand out means होता है सबसे अलग दिखना. If we are in a crowd, if we are यदि हम लोग अलग दिखते हैं तो उसमें stand out use कर सकते हैं. Example लेते हैं. We are taking two examples, so we will be able to understand by the examples. Example number one, she was standing out in the party. वह पार्टी में सबसे अलग दिख रही थी. Okay. Example number two, his red jacket is making him stand out in a crowd. यानी कि वो भीड़, उसकी लाल जैकेट है ना, भीड़ में उसे सबसे अलग बना रही है, अलग दिखा रही है. Okay, so ये हुआ stand out. So let's come into the next one. So guys, the phrase number second, that is stand out. Stand off. Stand off means होता है दूर खड़े होना. So let's take two examples. You will understand by the examples. Example number one, she stood off from the fire. यानी कि वह आग से दूर खड़ी हो गई. Okay. Example number two, please stand off. The fire may break out there. यानी कि दूर खड़े हो जाओ, आग लग सकती है वहाँ. Okay, so this is the phrase number second. Okay, so let's come into the next phrase. So guys, the phrase number third, that is stand down. Stand down means होता है आराम करना. So let's take two examples. Example number one, I am standing down under a tree. यानी कि मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ. Okay. Example number two, I decided to stand down after a long work, and I am relaxing. I am feeling relaxed. I'm relaxing now. Okay. तो बहुत सारा वर्क करने के पश्चात मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब आराम करूँगा, रिलैक्स करूँगा. ओके, तो दिस इज हाउ वी गाइस कैन यूज द phrases in our day-to-day life conversation. Guys, the phrase number 4, that is really interesting, that is stand by. Stand by means होता है इंतजार करना. Let's take two examples. Example number one, I'm standing by for my friends. मैं अपने friends के लिए इंतजार कर रहा हूँ. Example number two, I did not stand by for you. मैं तुम्हारे लिए रुका नहीं था वहाँ पर. Guys, the phrase number 5, that is stand aside. I mean हटकर खड़े होना या पल्ला झाड़ लेना, इसका ये भी मतलब होता है. Let's take two examples. Example number one, please stand aside from the door. दरवाजे से दूर खड़े हो जाओ. Okay. Example number two, please stand aside from the road so the ambulance can pass through. रोड से दूर खड़े हो जाओ ताकि एम्बुलेंस जा सके. Okay. So let's take another phrase. Guys, the phrase number 6, that is stand for. Stand for means होता है के लिए आवाज उठाना. So let's take two examples. Example number one, she is standing for poor. वह गरीबों के लिए आवाज उठा रही है. She is standing for poor people. Okay. Example number two, he stands for equal rights and opportunities for all. यानी कि वह सभी के लिए बराबर के अधिकार और अवसरों के लिए खड़ी रहती है. यानी कि सभी के लिए आवाज उठाती है, सभी के राइट्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए आवाज उठाती है. सो लेट्स टेक अनदर फ्रेज. Guys, the phrase number 7, that is stand before. Stand before means होता है के सामने खड़े होना. So let's take two examples here. Example number one, he
always stand before the protest. वह हमेशा protest के सामने खड़ा होता है, यानी कि आगे खड़ा होता है protest में. Okay, let's take another example. Example number 2. You will have to stand before the panel while you will go for the interview. यानी कि तुम्हें पैनल के सामने खड़ा होना पड़ेगा जब तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो. Okay, so let's take another phrase. So guys, the phrase number 8, that is stand against, यानी कि के खिलाफ आवाज उठाना, के खिलाफ खड़े होना. So let's take 2 examples here. You will be able to understand by the examples. Example number 1, the people are standing against the present government. यानी कि लोग है ना अभी की गवर्नमेंट, अभी की सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. Okay, let's take another example. Example number 2, that is she stood against the new policy that may harm the environment. यानी कि वह नई पॉलिसी के खिलाफ खड़ी हुई जो एनवायरमेंट को हार्म कर सकती है. Okay, so let's jump into the next phrase. Guys, the phrase number 9, that is stand with. Stand with means होता है साथ देना. Let's take 2 examples. Example number 1, I will stand with you in all hard times. मैं तुम्हारा साथ सभी हार्ड वक्त में दूंगा, सभी कठिन समय में मैं तुम्हारा साथ दूंगा. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, अ गुड लाइफ पार्टनर ऑलवेज स्टैंड विद इन ऑल टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. एक अच्छा लाइफ पार्टनर हमेशा सभी प्रकार के परिस्थितियों में साथ देता है. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द लास्ट फ्रेज ऑफ दिस डे. Guys, the last phrase, that is stand up. Stand up means होता है खड़े होना. Okay, let's take 2 example. Example number 1, please stand up. Always stand up when the national anthem is played. यानी कि जब नेशनल एंथम बजाया जाता है, चालू किया जाता है, तो हमेशा खड़े हो जाओ. Okay, let's take another example. Stand up when your teacher will come in the room. Okay, so जब टीचर रूम में आती है तो खड़े हो जाना. Okay, so guys, I have taught you the 10 phrases with this meaning. That is actually I forgot. That is stand, and these are very interesting, aren't these? If guys, you found this video relevant, helpful, so please like it and subscribe to my channel, because it takes lots of energy and hard work to make the video and edit the video and telling in a story form. Okay, so please like and comment on my videos, and what topic do I have to make videos, and how am I making videos, and how did you find this video? Is it helpful? Is it helpful or not? Okay, so please have a good day. So guys, have a good day. We'll meet in another specific video. Bye bye.